Hi viewers, this is Shomala Chatterjee, pursuing MSc in Biotechnology from Pondicherry Central University. In the last lecture, we discussed about glycolysis and we also discussed that the end product of glycolysis is pyruvate. Two molecules of pyruvate we get. We get two molecules of ATP and we get two molecules of NADH. I'm very sorry because I went through the video and I saw that the last portion which I wrote on the right side, it is not clearly visible. So I sincerely apologize for that. I will make sure that that mistake is not repeated again. Anyway, let me come to the current topic. So our story, it reached up to the glycolysis, right? And we know that the glycolysis, it occurs in the cytoplasm, isn't it? The glucose is broken down into pyruvate and some ATP is produced. Specifically speaking, two molecules of ATP we have already produced. Okay. But can the pyruvate directly enter into the Krebs cycle or the TCA cycle? The answer is no. ये जो pyruvate है ना, ये pyruvate, this has got, okay, ये pyruvate के पास actually दो options है. ठीक है. अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है, अगर ऑक्सीजन इसके पास अवेलेबल है, if the condition is aerobic, it will be converted to acetyl coenzyme A. This is what we call as linking reaction, जहां पर pyruvate is getting converted to acetyl coenzyme A. Why it is called as the linking reaction? This is something we call as linking reaction. Why we call this as a linking reaction? Because it links to major metabolic pathway. One is glycolysis. It links the glycolysis with TCA cycle. It links the glycolysis with TCA cycle. What it does, it links the glycolysis with TCA cycle. अगर एरोबिक कंडीशन है, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है, तभी ये पायरुवेट विल बी कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोएंजाइम A with the help of PDH complex. That is, what is PDH complex? What do you mean by PDH complex? PDH means pyruvate dehydrogenase complex. Pyruvate dehydrogenase complex. So glucose 6 phosphate will change into pyruvate. Glucose is a 6 carbon compound. Okay. Glucose is a 6 carbon compound that will change into pyruvate, which is a 3 carbon compound. We get two molecules of pyruvate, right? We get two molecules of pyruvate. And this happens in the glycolysis process. Okay. Glucose 6 phosphate is converted to pyruvate in the glycolysis process. Glycolysis जो है, this happens in the normal condition. ग्लाइकोलिसिस हमेशा नॉर्मल कंडीशन में होता है, लेकिन व्हेन द बॉडी इज स्टार्विंग, सपोज यू वेंट टू अ प्लेस वेर यू आर नॉट गेटिंग प्रॉपर फूड, आपको खाना नहीं मिल रहा है या फिर आप खा नहीं रहे हो, योर बॉडी इज नॉट टेकिंग प्रॉपर फूड, योर बॉडी इज स्टार्विंग, ठीक है, आप बहुत भूखे हो, ठीक है, द बॉडी इज स्टार्विंग, देन द बॉडी गोज फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, पायरुवेट से वो ग्लूकोज बनाएगा पहले बॉडी, फिर ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी बॉडी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है. सो नॉर्मल कंडीशन में ग्लाइकोलिसिस होता है और स्टार्विंग कंडीशन में जब आपको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है, देन द बॉडी विल गो फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है. सो दिस देयर इज अ बैलेंस, ओके, देयर इज ऑलवेज अ बैलेंस. तो ऑलवेज ट्राई, कोशिश करना कि बॉडी में ग्लाइकोलिसिस हो, बॉडी में ग्लूकोनियोजेनेसिस ना हो, क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस नॉर्मल कंडीशन में होता नहीं है, स्टार्विंग कंडीशन में होता है, ठीक है. और ये जो पायरुवेट है ना, एज आई सेड कि इसके पास दो ऑप्शंस है. ये अगर एरोबिक कंडीशन इसको मिल जाए तो ये एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स. This reaction is also called as a linking reaction because it links two major metabolic pathways, glycolysis and TCA cycle. Now, the question is where this linking reaction occurs. This linking reaction occurs in the mitochondrial matrix. This linking reaction occurs in the mitochondrial matrix. कहाँ होता है? Mitochondrial matrix में होता है. कहाँ होता है? Mitochondrial matrix में होता है. So, pyruvate जो है, that is produced in the cytoplasm. लेकिन ये जो लिंकिंग रिएक्शन है, दिस ऑकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है. दैट इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द लिंकिंग रिएक्शन.
लेकिन अगर इस पायरुवेट के पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, इफ इट इज एनारोबिक कंडीशन, तब क्या होता है? दो चीज हो सकता है. ईदर द पायरुवेट विल गो फॉर alcoholic fermentation, so it can go for alcoholic fermentation. The pyruvate can go for alcoholic fermentation, it can go for alcoholic fermentation, okay, or it can go for acidic fermentation, or it can go for acidic fermentation. ठीक है. Remember the end product of alcoholic fermentation, the end product is ethanol, whereas for acidic fermentation the end product is lactate. ठीक है. Alcoholic fermentation usually occurs in the microorganisms, whereas the anaerobic fermentation in case of vertebrate is usually acidic fermentation. Let me give an example of this acidic fermentation. When you do a lot of exercise, जब आप बहुत exercise करते हो, over exercise करते हो, which is not at all good, when you usually hit the gym for the first time, you will experience a lot of pain. Okay, बॉडी में बहुत दर्द होता है. ठीक है. दिस ऑकर्स बिकॉज आप तो एक्सरसाइज कर रहे हो. ओके, यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज, योर बॉडी नीड्स मोर एनर्जी, पायरुवेट तो तैयार हो रहा है, लेकिन पायरुवेट के पास सफिशिएंट ऑक्सीजन ना होने के कारण द पायरुवेट इज फोर्स टू पार्टिसिपेट इन दिस एसिडिक फर्मेंटेशन. लैक्टेट तैयार होता है एंड लैक्टेट इट एक्यूमुलेट्स इन द मसल्स. तो इसीलिए जब आप बहुत दिन एक जगह बैठने के बाद when you go and hit the gym or you do a lot of exercise, or for that instant when you go and dance for a 2-3 hours, you dance in the fests, college fests and all, then you will experience a lot of pain the next day when you get up from the bed. बहुत दर्द होता है, and that is because of this lactate uh, accumulation in the muscle. क्यों होता है वो? क्योंकि the glycolysis happens, which is the first step of cellular respiration. पायरुवेट हो जाता है तैयार, लेकिन पायरुवेट के पास ऑक्सीजन नहीं है. सो अगर वो उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, इट विल डेफिनेटली गो फॉर एनारोबिक पाथवे. इट विल चूज एनारोबिक पाथवे. और एनारोबिक पाथवे में क्या होता है? फार्मेंटेशन होता है. इधर एसिडिक फार्मेंटेशन होगा या फिर अल्कोहलिक फार्मेंटेशन होगा. लेकिन हम तो वर्टिब्रेट्स हैं, हमारे केस में क्या होता है? एसिडिक फार्मेंटेशन होता है, तो लैक्टेट प्रोड्यूस होगा, और ये लैक्टेट जो है वो एक्यूमुलेट होगा हमारे मसल्स में और बहुत दर्द होता है. ठीक है. सो दिस इज the linking reaction that I wanted to discuss before moving on to the next one, that is TCA cycle. Linking reaction, remember, it occurs in the mitochondrial matrix where the pyruvate is getting converted to acetyl coenzyme A with the help of PDH complex, pyruvate dehydrogenase complex. And why it is called as the linking reaction? Because it links two major metabolic pathway, glycolysis and TCA cycle. And when there is no oxygen availability for the pyruvate, then it goes for alcoholic fermentation or it goes for acidic fermentation. Is that clear? Okay. If you have any problem, please let me know in the comment section. ठीक है? Thank you.